We are live. Welcome, everyone, and good morning, good evening to everyone at the respective places. It's a great pleasure to be starting the first episode of Climbology. And Climbology evolved because we felt there was a need, uh, which was felt as we were watching some shows, and we saw that climbers are having problems, especially climbing in certain sectors. And here I was thinking that we have a wealth of information and knowledge amongst ourselves, having climbed so many mountains, gone on treks, and why that knowledge is not being channelized where people can make use of it. And interestingly, this was also the 30th year when we had scaled Hanuman Tibba and Friendship Peaks in an attempt called Prayas 93. And exactly 30 years ago, some of us were lucky to be standing on top of Hanuman Tibba. And on top of that, we also, tomorrow is our anniversary, or in India today is the anniversary when people were able to scale Friendship Peak, and then another team scaled Friendship Peak on the 18th as well. So it is an absolute delight and honor to have the co-mates and team members of this beautiful expedition. And our efforts will be to help everyone remember some of the important things on this expedition so that people who are going now or are planning to go sometime in the future, they can make the most of this knowledge and are able to successfully climb. And as an important aspect, I watched some videos on Hanuman Tibba, and they, because I like to keep an eye on who is climbing and what's on YouTube about this mountain, what new shots can I see, how can I relive those moments. And there are times when you will find there are videos where people have gone for an unsuccessful expedition, and I find, oh, maybe you made this mistake, or you didn't do this, or you could have done this better. And that is the reason why Climbology evolved. And I think we will, over a lot of episodes, we'll bring a lot of knowledge about different treks and incidents. So with that, I would like to first go to the two managers we had on our expedition, and followed by the leader of our expedition, which will be coming shortly. But I don't see Dr. Dhanam Singh's video is on right now. But we have Dr. Meenakshi, who's our manager. So let's start with Dr. Meenakshi. Dr. Meenakshi, welcome to Climbology 101. And it's a pleasure to have you. How do you look back all these 30 years? And we can be bilingual. हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं. It was wonderful when we planned for this expedition. I know there were so many ifs and buts whether we can go or not, and that was after 15 or 20 years after the first expedition from HAU. Yes. I hope so. And then when there was lots of planning, and finally it was decided that we will go for expedition and for Friendship Peak and for Hanuman Tibba. So it was June, and it was very hot, and everybody was very excited that we all have some new to explore. And expedition means lots of preparations, lots of planning, and I know that Kamish and his team, that time, Ravi was there, Sandy was there, all they planned very well, and it was, I think, so many days to plan for this. And after planning, when we started from Sir Big Sir, Dr. Chopra is there. Then when we started, I know so much excitement was there. And when we started from Hisar and reached to the first destination, Manali and Bakardhaj, Camp 1. So up to that, there we all were so excited that okay, we'll do it. Then we had lots of luggage, and we had two porters that I forgot the names. Madam Ganthu, Pate, and Moti Pate. Ramesh.
Yeah, three were there. They were our guide, and that time they were our guide, and they were telling us lots of things about that area. And Famish and his team, Ravi and Ramesh, Goel, they all have explored so many things, and we are just depending on, especially myself. I was depending on you guys that you will confident that we can do it. And Rajini and Mitu, Bimlesh, and I think five girls. Five girls were there, and that time it was very, for me at least, it was a very great. You can say it was the goal, whether I can complete it or not. So when we went to from Bakardha, we had Camp 2 pass, and that was very tough track. Yeah. And lots of we walked through the glaciers, 3 hours walk, I think. Uh, if I remember, Yes. our walks in the glacier, and that time we had one avalanche experience also, if Yes. I'm right. Yes. Yeah, So and every we day we used to hear some avalanche sound, big sounds of avalanche, and could see avalanche from the on the Byaskund side, also on the south side of Hanuman Tibba. All those areas were something. But thank you, ma'am, for the lovely remarks with the opening remarks. Let's go to Dr. Dharam Singh, the manager in chief for our expedition. Sir, how does it feel to look back to 30 years? Oh, Dr. Pavnis, it's a great pleasure. You have provided me an opportunity to go back 3 decades and recall all the sweet memories and recall the initial days of planning this expedition where you put in everything in black and white and came with all the details of this expedition. But the limiting factor to begin with was the funding, the money, and all the boys, Ravi, Ramesh, and all the team members going around in the city collecting rupees 2, rupees 3, rupees 5, and then arranging some 10,000 rupees from the district administration and another 10,000 from the university. And really, still, we were all short of it, and then each one was contributing to the best of their abilities and to the maximum of their pockets. But with all said and done, the efforts that you made and the team, all the members, Dr. Meenakshi, with all due regards to her tireless nature and working for each one from morning to evening and planning and thinking that each one has been well fed. It was really, seeing is believing. And I recall that when some of us were laughing or cutting some jokes, अपने गोयल भाई की दुकान, the store, you might be, some of us will be, laughing that Makartaj base camp and the team running up and down, and some of the guys were there. If asked, if somebody is to go back to manage some requirements, some groceries down below. So some of us or one of us was always ready. He was ready to go down, then going up. So I don't know what else we should talk about on this issue, but that load ferry from Bakarta to Camp 1 at the base of Tentu Pass was really, for 2-3 days we carried on this business, and in itself it was tiring and also part of acclimatization to go to the higher places and making the pass through that Tentu Pass, the point which was really a bottleneck, because that rope fall in that patch from where Rathi came running down. No, I can't go. I stay back. And see, you just tell me what else I can talk about, Dr. Police. My appreciation to each one of you and reminding me my good old days where I had plenty of stamina and endurance and can move up and down with all young guys at age 40. Really, I appreciate.
And Thank my thanks and gratitude to Dr. Pavneesh for arranging this beautiful meeting and connecting all guys. I see the face of engineer Ravi after a long while. It's difficult to connect to this boy these days. Maybe he's too busy. He has the responsibilities of big offices. But it's a pleasure. He's making some good strides in life, and I congratulate him today that he is professor now. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much for the opening remarks. We have some wonderful stories to talk about on our expedition that happened. But how can we start without bringing the leader of our expedition, Satyapal Khokar, Dr. Satyapal Khokar, our beloved senior who mentored and took us along on this wonderful journey. So I would request Dr. Satpal to kindly say his opening remarks. सभी को नमस्कार। आज इस मीटिंग से मैं 30 साल पीछे चला गया हूँ। मुझे सभी के कुछ नए चेहरे और पुराने चेहरे भी मेरे सामने घूम रहे हैं कि 30 साल पहले हम कैसे थे। This was a wonderful experience. The expedition was a dream of all of us, and because of the efforts of everybody, and particularly our managers, Dr. Chopra, Dr. Meenakshi, and all the members, this dream was converted into reality. So I am very happy. सबसे मिलके, सबसे बात करके, बाकी डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया है। मैं ये चाहूंगा कि ये मीटिंग इन मेंबर्स की कोई एक मीटिंग अलग से बुलाई जाए एचएयू में। थैंक यू। वो डॉक्टर साहब जरूर होगा, उसको करेंगे। लेकिन आपके लिए एक खास क्वेश्चन मेरा ये था कि जब ये टीम बन रही थी और आपको पता था कि आगे एक डिफिकल्ट पीक है जो स्काइल करनी है, साथ में फ्रेंडशिप का भी पॉसिबिलिटी थी और जो हमने प्लानिंग जैसे चल रही थी, उस टाइम पे आपको क्या ख्याल थे कि कितना सक्सेस का आपका चांसेस लग रहा था कि वेदर वी विल डू इट और नॉट? व्हाट वर योर थॉट्स, द काइंड ऑफ टीम यू हैड? माउंटेन पे ऑलवेज एवरीबॉडी इज ऑप्टिमिस्टिक, एवरीबॉडी इज हेल्पफुल, होपफुल। लेकिन कब क्या हो जाए माउंटेन पे सिंपली उसका कोई अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इतना पक्का था कि कुछ मेंबर्स टीम के जिस तरीके से सबकी डेडिकेशन थी तो विल स्केल इट। एक मेंबर स्केल करता है, पूरी टीम क्लाइंब करती है पीक को। और आई वाज वेरी मच होपफुल एंड वी डिड दैट। जी, thank you so much for your opening remarks, and I think I have another member to go to before I involve everybody else as well in the conversation, but we'll slowly go to each member one by one. But I'm going to go to somebody who was with me from day one. We were put into a rope by accident. Everybody knows Ashwini, Yogi and me, we were not supposed to be together, but we were put together by accident, and that was from day one. We stayed together and we went all the way to the top of Hanuman Tibba, absolutely in sync with each other, supporting each other, and the faith we had in each other was just immense and intense. So I would like to request Ashwini Yogi, as we call him, as partner, please, your opening remarks, if you can unmute yourself, and also then give your opening remarks. How do you feel about this occasion? What are your thoughts looking back at 30 years, especially about the expedition? Thank you, Dr. Purnish, and all team members. I'm really happy and glad to see you again. मेरा पहला ही विचार ये है कि एक बार फिर से चलें तो और मजा आएगा। That's a good one. और ये सब सिर्फ आपके साथ ग्रुप में होने के कारण ही मैं वहां तक पहुंच पाया। उसके अलावा तो मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ इतना ही सोचा कि पीछे पीछे चलना है, ये चले जाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा। But सबसे difficult part कहाँ पे लगा था योगी? In the whole expedition, what was the hardest part of the mountain for you? To get selected in the team. Wow. The rest of the mountain was easy. That's amazing. Yeah, thank you. That is a remarkable feeling that you mentioned, that getting selected in the team was the hardest.
It kind of speaks of your efforts that everything looked so simple when we were on the mountain. Literally, it was so much fun. It felt like we just kept doing what we were supposed to, and things happened along the way. Before we go further, there is a gentleman here who actually did. There are two people. We'll connect you to them, the other person, after a little while. But before that, we are very lucky to have Sandeep Gupta here with us today. And he had one of the toughest tasks in the expedition. That is, he voluntarily decided to leave Camp 3 to give more food to us who were on Camp 3, and then leave and descend down the mountain, being so close to the summit. He was probably just one day away. And that was also with Dr. Ranjit Kharab, who we're going to meet after a few minutes or after a little while. But he is busy doing a surgery. He'll be with us shortly. But Moshmi is here with us. She has heard a lot of these stories from us in the last 30 years, or since she joined this big family. But before we go to Ranjit and talk about this selfless act that Ranjit did, there is another guy who did this selfless act, and amazing gestures. I sometimes try to put myself in his shoes and say, how would I feel if I had to leave from Camp 3 as a sacrifice for others to climb, just to give them more food? And I feel so much of respect for them, and I feel how hard it must have been for them to be so close. And I want to tell the whole world that Sandy was doing amazingly well. Like, his fitness was just amazing. He was all set to come with me to the top. He had not voluntarily decided to go back. So Sandy, welcome, and your opening thoughts for this occasion. Yeah, thank you, Dr. Purnish and Mosmi. I vividly remember Dr. Ranjit. In fact, he was first to volunteer for this thing that I'll go back. Then I subsequently joined him for the journey back from Camp 3. In fact, we can call that a summit camp. That was summit camp. This 17th June, in fact, is doubly important for me. Today is anniversary for our team's success on Mount Hanuman Tibba also, and secondly, today is birthday of my son also. So Dr. Pavnesh, आप देखिए किस हिसाब से प्लानिंग की हमने 17 जून की 17 जून अपने लिए इम्पोर्टेंट बनाई हमने. Now it makes much more sense. Yeah. It makes so much more sense. Yeah. In fact, I'll take 5 minutes. Yes, please. जब ये होता ही है, जब हम पीछे मुड़ के यादों की तरफ देखते हैं, तो यादों में एक और खासियत होती है कि समय की परत इसके ऊपर चढ़ती चली जाती है और यादें कुछ धुंधला जाती हैं. लेकिन ये वो यादें हैं, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, समय की सिलवटों के अंदर से झांकती हुई कुछ चीजें, मुझे कुछ यादें ऐसी नजर आती हैं जो जिनके विविड कलर्स हैं अभी भी, उनमें कोई धुंधलाहट नहीं. एक एक पल, एक एक क्षण मुझे आज भी ऐसे ही याद है जैसे अभी कल ही हुआ था. मुझे अभी भी याद है, योगी यहाँ बैठा है, वापिस जा रहे थे, कौन ये सैक्रिफाइस, हमने तो दूसरे किस्म का सैक्रिफाइस किया. मुझे अभी भी याद है, योगी ने अपने लिए किए कुछ लिकर लेके गया था लास्ट मोमेंट्स के लिए, और जब मेरे को वापस जाने का हमने डिसाइड हो गया था, योगी ने मुझे अपने बैग में से निकाल करके वो 1 पैक ऑफ लिकर वो ऑफर किया था. वो मेरे को वो सीन अब तक, वो डायरेक्शन तक भी याद है. हम कहाँ बैठे थे, हमारे टेंट कहाँ लगे हुए थे, बहुत सी एवरीथिंग आई रिमेम्बर. डॉक्टर मीनाक्षी, आपको याद हो, डॉक्टर मीनाक्षी ने कुछ समय अपना खत्म होने से पहले, यू हैड टू रिटर्न बैक ड्यू टू सम इमरजेंसी, और मेरी ड्यूटी लगी थी डॉक्टर मीनाक्षी को मनाली तक छोड़ के आने की. 18th was my birthday. डॉक्टर मीनाक्षी को मैं छोड़ने गया था वापिस वहां तक, और फर्स्ट टाइम डॉक्टर मीनाक्षी ने मुझे, मैंने जिंदगी में कभी उससे पहले नहीं खाया था, मुझे डॉक्टर मीनाक्षी ने वहां थूपा खिलाया था एक दुकान पे ले जा करके मनाली में. तो वो चीजें मुझे अभी याद है. मुझे याद है डॉक्टर पमीश का, मुझे वो गाना भी याद है. नीचे आपको याद हो डॉक्टर पमीश, एक और कैंप लगा था और उन्होंने हमें टी पे इन्वाइट किया था अपनी टीम को, और मैं आज भी बताता हूँ, आपने गाना गाया था, कागज की कश्ती बारिश का पानी. मुझे अभी भी वो भी याद है. मुझे याद नहीं था, बट थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी. मुझे वो सीन भी याद है जब हम सब बहुत
बुरी हालत में जीत जूत के जब वापस पहुंच गए थे और हमें मनाली में, हम कई दिन से खैर नहाना नूना तो वहाँ क्या होना था, और वो क्या नाम था उसका, वशिष्ठ बात। वशिष्ठ कुंड में हमने, वशिष्ठ बात। हाँ। हाँ वशिष्ठ बात, और उसमें खूब भीड़ थी, हमारे एंटर होने की भी जगह नहीं थी, तो हमने बड़ी एक नाटकबाजी करके खाली करवा दिया था उसको। तो ऐसी बहुत 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 सारी यादें हैं मेरे साथ। सबसे बड़ी चीज इस एक्सपीडिशन ने जो मुझे दी, मुझे जीने का नजरिया दिया। फ्रेंडशिप पीक ने लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप दी। हनुमान टिब्बा ने मुझे हनुमान जी का पूरी उम्र के लिए आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ा था इसका नाम था प्रयास। प्रयास 93 इसको हमने नाम दिया था। वो प्रयास शब्द आज भी मेरे साथ जुड़ा रहता है। मेरे को जब भी कोई, whenever I do something, I start something, तो मैं हमेशा याद करता हूँ, और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अब भी याद करता हूँ उस एक्सपीडिशन को, कि हमने कैसे शुरू किया था, क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी। और जीत कभी व्यक्तिगत नहीं होती, जीत हमेशा टीम की होती है, ये भी मैंने इस एक्सपीडिशन से ही सीखा था। ये कुछ चीजें थी। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 2 मिनट अगर डॉक्टर पवनीश की इजाजत हो तो मैं और ले लूँ। एक्सपीडिशन ने मुझे कैसे एक एनर्जी मुझे दे के रखता है, एक ऊर्जा मुझे दे के रखता है। पीछे अभी रवि कह रहा था ये फिटनेस का, तो वो मैंने लाइफ लॉन्ग अपना एक बना के रखा कि नहीं, ये फिटनेस नहीं छोड़नी है। तो पीछे जब मैं अभी आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हाफ मैराथन एक्चुअली, तो काफी एफर्ट करने के बाद भी मैं 17, 18 तक कर पा रहा था। तो वन फाइन डे मैंने वो याद किया कि मैंने कहा सैंडी, ये अब समिट कैंप है, इस बार तूने समिट कैंप से वापस नहीं जाना है, तूने 21 पहुंचाना ही पहुंचाना है। वहां से मुझे ऊर्जा मिली, और आप मानिए वो थॉट मेरे माइंड में आया, एंड दैट सेम डे आई टच फर्स्ट टाइम आई डिड हाफ मैराथन। तो ये जो सिर्फ एक प्रयास 93 एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन नहीं है, फॉर ऑल यूट्यूब वॉचर्स आल्सो आई वांट टू टेल, these are the moments and these are the teams which God creates. हमारे सबके जीवन में ये ईश्वर की एक आशीर्वाद के रूप में हमने इसको लिया है, मैंने पर्सनली इसको लिया है। और ये मोमेंट्स बिना गॉड की विश के क्रिएट नहीं होते, ऐसी टीम गॉड की विश के बगैर क्रिएट नहीं होती। और ये वो चीजें हैं जो हमारे साथ जिएंगी, हमारे साथ ही रहेंगी, और हमारी फैमिलीज, इवन एवरीबॉडी विल एग्री कि एक एक पल हमारी फैमिलीज को भी सबको मालूम है, हमारे बच्चों को भी सबको मालूम है कि उस समय एक्सपीडिशन में इन लोगों ने ये किया था। स्पेशल थैंक्स टू द होल टीम। डॉक्टर धर्म सिंह को प्रणाम है। डॉक्टर धर्म सिंह की मुझे आज भी याद है, हम बस में जब एक एक सबके लिए ना, डॉक्टर पवनीश एक गाना गा रहे थे सभी के लिए। मुझे अब भी याद है डॉक्टर धर्म सिंह के लिए पवनीश ने गाना गाया था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। कितनी एक एक चीज हमें याद है कि समय की परतें भी उन यादों को बिल्कुल धुंधला नहीं कर पाई। थैंक यू सो मच। मैंने लगता है कुछ ज्यादा टाइम ले लिया, मैं इमोशनल हो गया। थैंक यू डॉक्टर। Thank you, Sandy. Thank you so much, Sandy. Those are really remarkable memories, and thank you for the sharp memory you have for small things. That was amazing. मैं अभी जाना चाहूँगा मौसमी की तरफ, as an independent person who was not part of our expedition, but a wife of one of our climbers, who is right now busy doing a surgery and will be with us shortly. How do you perceive this as the stories you have heard, especially of Ranjit's sacrifice from Camp 3 and just the whole aura of this mountain and expedition? What are your thoughts about it? So my first introduction to the expedition was Dr. Pavnish at your place. I think we had just come back from my first trek, and we all had gathered at your place in Delhi that time. There was a complete narration of the expedition, and I was told about the sacrifice, the word sacrifice Ranjit made for the entire team. Yes. And my respect for my husband actually went many, yeah. Sorry about the disturbance. Yeah. Of the entire expedition, we were talking about it, and I mean, each one of you have
really shown a lot of grit, lot of endurance, perseverance, and the family should take all these values, imbibe of all these values, and uh, Yeah. try No, to. I mean, I don't think this kind of expedition will be possible now, but there are a lot of things to carry forward in our lives and practice it in every moment, and also from my personal during the trek, you get to know the best and the worst of a human being. And I have done many treks with Ranjit after getting married. We did Indrahara, which was my most difficult trek. We crossed Indrahara, and I realized that you get to know the best of human being when you trek together as a team. And very true. obviously, you have to work in unity. You have to take care of each other. I remember Ravi had a knee problem. Ravi, do you remember? And how we kind of pulled him along, completed our Indrahara trek. So I've also been a trekker after getting married to Ranjit, and it's been a wonderful experience. And I look forward to many more treks. Yeah. And we've been a long break, but we plan to restart. I mean, it's a wonderful Thank. experience. Yeah. Yeah. Thank you so much, Moshmi, for those words. I think we totally understand where how you heard all about the expedition and what kind of qualities all these activities bring. We that actually is a great way to segue to our next speaker, which is the 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 three amazing youngsters who had taken we had taken on the expedition with the vision that as the club grows, the youngsters should be there so that they can experience an expedition. And we were shown that we did a right decision because after we were almost in the senior years or we left the university, these three climbers actually did an amazing job to carry on the club for many years. After that, they became the general secretaries and the vice presidents and ran the club so well for many years. And the trio of that is Dr. Satbir Josan, Dr. Ravi Gupta, and Dr. Jairaj Danda. And so, one by one, let's quickly go to all three of them. So, first, Dr. Satbir, Dr. Josan, your thoughts of reconnecting after 30 years, and also what did the expedition bring for you? Oh, please unmute yourself. Hello. Yeah, Good morning, yeah, everybody. Yes, so it was amazing experience. First was the selection process. So the first hit was will we be selected, but with God's grace, and we were the part of. Me and Dr. Ashwini were a good buddy, and he had basic course during that time. He did mountaineering basic course. So, but there was quite a lot of competition during selection process. So somehow I was also in the team. Then it was amazing experience going from Solang Valley to the pre-base camp and to the base camp. And then I was sort of staying with the Dr. Dhanshing Chopra's tent. That was a yes, really amazing, and it was a sort of honor to be with him. And then from there, when we started climbing for Mount Hanuman Tibba, then we went to the first camp. And then one experience I had to share, like we had to stay back Dr. Goyal and Rajni and me in that first base camp for one night. And that was really something like there's something happened during that time, couldn't come back down. So next day we came back down, and
from there, then the climbing the Friendship Peak was really amazing. It was really adventurous to be sort of lot of adventure during the Friendship Peak climbing. And overall, it was really, really amazing. We still have so much memories during the expeditions and the first and part of the first expedition. With different experience of that. Ji. So, And I have to mention here that Dr. Sadbir Josen, along with Ravi and Jairaj here, were able to scale, along with Dr. Dharam Singh, were able to scale Friendship Peak, and they brought success. We had a double successful expedition. The Prayas was doubly successful. So let's go to Dr. Jairaj Danda and listen to his views and his memories about this expedition and how does he recall the whole experience. Hey, Dr. Pawnesh, thanks to you for organizing the Kalai Bolhoji meet. Thank you so much for taking pain and organizing it. I My don't know pleasure. why I was selected for Prayas 93. I was very new to the club. I had hardly any mountaineering experience. If I remember, I had done a couple of rock climbing camps and only one high altitude trekking to Badrinath. But somehow I was selected, and in the starting with the expedition means we had two expeditions. One was organizing the resources for the expedition. So as Dr. Dharam Singh mentioned, funding was the major issue, but nobody disappointed us, however small the contribution was, maybe 10 rupees, 20 rupees, but nobody disappointed, and that was a great achievement. We collected so much funds from different sources and then organized all the resources. In terms of mountaineering, I'll say that was my starting point of mountaineering journey. We climbed Friendship Peak along with Dr. Dham Singh and Ravi and all others. And after that, I did my basic course in mountaineering, advanced course in mountaineering. So it ignited mountaineering interest in me in the real sense. So thank you so much, Dr. Pawnesh and the team leaders for giving me the opportunity to be part of Prayas 93. It's a lifelong memory and I still cherish it. Thank you so much. Thank you, JRD. That was amazing. I think the reason you got selected, if I recall, the whole process was in those two rock climbing camps and the Badrinath trek. You showed so much of promise. You were one of the youngsters who was working so hard, carrying load, supporting each other, and that's what you want to see in a climber, is that they go above and beyond. They're not selfish about themselves. They are there for others, because everybody can take care of themselves, but in those hard and harsh conditions, when somebody starts taking care of others, that's the kind of something we wanted to highlight, and the kind of effort you put in, the kind of load you would carry, making sure your others' life became easier. I think those were the highlights. And that was a common pattern, which I would say in the three youngsters we had carried amongst us, which was Dr. Sadbir, Ravi, and you, along with Bimlesh as well. Unfortunately, Bimlesh could not be with us today. But having said that, let's go to Ravi and let's listen to what Ravi has to say over all these 30 years and the efforts and the expedition, the experience. Welcome, Ravi. Good morning, Dr. Saab. आप सबसे पहले first of all I want to thank you for organizing this. और मैं तो समझ लीजिए कि भाई जब मैं 19 साल का था, मैं अभी सोच रहा था, मैं वैसे अभी भी हरकतें मेरी 19 साल वाली हैं, सारे यूनिवर्सिटी में भी यही बोलते हैं, पर ये है कि मतलब मेरे को तो ये नहीं समझ में आए कि भाई कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म. मेरे को तो एक कंप्लीट लाइफ और मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबका प्यार इतना अभी तक इतना ज्यादा मिलता है कि मैं उससे अभी तक अलग ही नहीं समझता कभी भी अपने आप को, कि भी वो जैसे एक एक्सपीडिशन का ही पार्ट चल रहा है. और इसमें मेरे को लगता है कि मैं तो आप सब भी, लेकिन पूरा दिन बोल सकते हैं. मैं कितने सालों बाद ही डॉक्टर योगी के पास कल गया, भाई जैसे भाई उठ के चला गया, भाई जैसे मतलब ऐसे नहीं मुझे लगा कि मैं 20 साल बाद जा रहा हूँ या 15 साल बाद. हाँ डॉक्टर साहब, उनका फोन आया था और ये आपको कल ज्वाइन करना है. मतलब कोई ना ऐसे समझ में आती है कि टाइम इतना ज्यादा हो गया भाई.
और मैं दिल्ली में रहा, मैं डॉक्टर रंजीत के पास मतलब ऐसे ऐसे फोन कर देता था कि मुझे आईएसबीटी से ले जाओ। अब मैं समझता हूँ यार आईएसबीटी से अगर कोई मुनीर का लेने आए तो कोई मजाक थोड़ी ना है कि भाई आप ले जाओ। तो मतलब ये है कि लोग जो एक्सपीडिशन में जो सेक्रीफाइस और ये सब चीजें बात कही, एक एक ने इतना इतना ख्याल रखा। शायद एक तो हमें ये बेनिफिट मिला कि भाई हम सबसे छोटे थे, तो बहुत एक हमें तो हर एक से ही बहुत सारा लगाव और प्यार मिला, और अभी तक उनकी फैमिली से भी ऐसा ही मिलता है। मतलब लिटरली वो हमें ज्यादा एक बारी को, हमें तो लगता है अपने बच्चों से भी ज्यादा हमें तवज्जो देते हैं, हमें ज्यादा एक बारी को अगर कोई चीज देनी हो तो हमें ही देंगे, उनके लड़कों से भी ज्यादा एक बारी हमें ही समझते हैं कि नहीं यार ये कह रहा है तो एक बारी इसकी मान लो। तो एक्सपीडिशन तो अपने आप में एक अलग से कंप्लीट एक दुनिया है। और दूसरा मुझे लगता है कि वो जीवन भी एक एक्सपीडिशन ही है। अभी मुझे ये समझ में आया कि कुछ ज्यादा आनी जानी है नहीं, बस जाना है, सबमिट करना है और आना है, खत्म बात। भाई कहीं पे कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं, कोई साथ रहना है और आना है, कुछ ज्यादा निचोड़ और कुछ है नहीं, बस ये एक यादें हैं, एक साथ है और एक कंटिन्यूटी है। भाई हाँ, एक दूसरे के साथ बात कर लो, एक दूसरे के साथ थोड़ा सुख दुख पूछ लो। और अब जैसे मैं कई कई सारी चीजें बीच बीच में हुई, डॉक्टर धर्म सिंह ने कहा कि बात कम करता है, तो मुझे तो एक वो ऐसे वो शेर ध्यान में आता है कि वो जो क्या है, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं आ रहा, कि भीग जाती हैं पलकें जब तन्हाई में, तो कांप उठता हूं कि मेरा दर्द कोई जान ना ले, और यूं भी डरता हूं कि मेरी आंखों में कुछ देख के पहचान ना ले, ऐसा कुछ करके। तो आप लोगों से बात करके ऐसा लगता है यार कोई घबराहट होती है कि भाई जैसे कि भाई यूं लगता है यार हमारे को दुख तकलीफ नॉर्मल में भी रहती है, आपसे बात करूंगा ना तो यूं हो जाएगा कि यार बात नहीं हो रही। हमारा इमोशनल रवि इज इमोशनल अगेन, बट थैंक यू रवि फॉर ओपनिंग योर हार्ट एंड शेयरिंग नहीं, योर थॉट्स। पर क्या होता है कि मतलब इसलिए नहीं बात करते कि भाई नॉर्मल की भी तो रहती है ना थोड़ी सी। मुझे पता है कि मैं जिसको भी कहूंगा ना वही हेल्प करेगा, और जो भी मेरे को भी अगर कोई कह दे, अगर मान लो जयराज कह दे यार तेरे को कल दुबई आना है और मेरे को काम है, तो मेरे को 2 मिनट नहीं लगेंगे कि भाई ये सोचने में कि कैसे तो जाना है और मतलब कैसे करना है, और सबको पता है ये बात। तो मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है और इतना अच्छा मुझे सबसे प्यार मिलता है। अब मैं डॉक्टर जोसन वाली वो बात थोड़ा क्लाइंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बताना चाहता हूँ। डॉक्टर जोसन ने बताई कि हम चले गए कैंप 1 पे और एडवेंचरस हो गए कि भाई कैंप 1 में ही सो जाएंगे, और स्लीपिंग बैग थे नहीं। मुझे लगता है कि एज अ क्लाइंबर, एज अ माउंटेनियर, वो हमारी बिगेस्ट मिस्टेक थी, क्योंकि थोड़े नॉइस भी थे, एडवेंचरस थे, हमने ज्यादा लिया ऐसे की। और फिर डॉक्टर धर्म सिंह ने हमारा स्पेशली रात को अंधेरे में वो गाइड को भेजा स्लीपिंग बैग्स लेके। तो ट्रेवलिंग विदाउट स्लीपिंग बैग, और ऐसे हम सोच रहे थे कि भाई रह लेंगे, और उसमें तो ये बड़ा कोई ऐसा, हमें माउंटेनियरिंग में बड़ा सिस्टमेटिक रहना पड़ता है, जितना ज्यादा से ज्यादा हमें डिसिप्लिन वहां जरूरत होती है, देखने में तो लगता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कभी भी ऐसे क्लाइंब नहीं करें कि भाई हम अपना स्लीपिंग बैग नहीं कैरी कर रहे हो। किसी भी सिचुएशन में हमें अगर कहीं रुकना पड़े तो हमारे पास स्लीपिंग बैग हो। वो नाइट हमारे पूरे ग्रुप के लिए बड़ी स्केरी सी थी। फिर बहुत मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, ये वो। फिर एक चीज मुझे ध्यान आती है आजकल, मैं तो खैर पूरा पूरा बोल सकता हूँ, मुझे तो कोई एक्सपीडिशन और माउंटेनियरिंग, मैं तो हमेशा रोज जीता हूँ माउंटेनियरिंग क्लब, मैं तो एचएयू में हूँ। मैं तो जैसे आजकल स्पेशली एक्सपीडिशन जाते हैं हिमालयाज में कि भी क्लीन हिमालयाज। मुझे याद है हमारे जो लीडर थे डॉक्टर खोखर, वो उन दिनों में भी बड़े बड़े ढोके ला रहे होते थे। वीडियोस देखो तो अभी भी दिखेंगी कि वो पूरा कहीं से वाटर बोतल उठा रहे हैं, कहीं पे ये उठा रहे हैं, ढोढा के सब ला रहे हैं। आज के दिन तो स्पेशली ऐसे एक्सपीडिशंस जाते हैं जो कि क्लीन हिमालयाज, ग्रीन हिमालयाज, उसको बड़ी फंडिंग मिलती है। तो उन दिनों में भी हम लोग अवेयर थे इस चीज को लेके कि भाई नेचर में जा रहे हैं, और बड़ा उस हिसाब से एक्सपीडिशन अच्छा था कि भाई सभी लोग कुछ ना कुछ पीक स्केल कर पाए। फिर मैं एक चीज और छोटी सी बताना चाहता हूँ कि कैमरे की बड़ी अहमियत है। जैसे कहते हैं भाई, जब कपिल देव ने 183 क्या नॉट आउट मारे वर्ल्ड कप में, तो उस दिन कुछ वो कैच नहीं हुआ। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं एक यशिका MF2 मेरे पास कैमरा था, तो वो मैंने डॉक्टर साहब को दे दिया, भाई ठीक है, हमें तो कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो वो डॉक्टर साहब वो हनुमान टिब्बा पे भी लेके गए वो कैमरा। और फिर बाद में वो
इधर भी गया, फ्रेंडशिप पे भी गया, पर जब मैं गया जब मेरे पास कोई कैमरा नहीं था। मुझे कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरी कोई उस हिसाब से उस पे कोई फोटो नहीं है। तो वो कैमरा अभी भी मैंने ना अपने कपड़ों की अलमारी में रखा हुआ है, रोज ही वो सामने पड़ा होता है। अभी तो वो फंक्शनल नहीं है, ऐसे उसके कुछ टूटा वूटा सा हुआ है, लेकिन ऐसे बस वो वहां रखा ही रहता है, मैं देखता रहता हूँ। मतलब छोटी छोटी यादें हैं, आपको तो पता है मैं एचयू में हूँ, तो माउंटेनिंग क्लब का ऑफिस, हर चीज। खैर मैं तो पूरा पूरा बोल सकता हूँ, आप लोगों को पता है मेरा, और मैं अब क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। जिस मैं उस पे 2 पॉइंट्स तुम्हारे पॉइंट्स पे आई वांट टू ऐड। वन इज अबाउट द कैंप वन इंसिडेंट अबाउट द, तब स्लीपिंग बैग नहीं था जब, तो उसमें हमें उस चीज़ का पता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग एडवांस पार्टी, हम लोग कैंप 2 पे थे जब तुम लोग कैंप 1 पे आए, या कैंप 2 पे थे या कैंप 3 पे थे। अगर हमारे उस पे होता या उसमें होता, तो आई कैन प्रीटी मच गारंटी कि वो ऐसा स्टेप मैं लेने नहीं देता, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में अगर होता। बट हैविंग सेड दैट, बट वी वर नॉट अवेयर, क्योंकि हम लोग कैंप 2 पे थे, तुम लोग कैंप बेस कैंप पे थे, और वहाँ से कैंप 1 गए एंड यू डिडंट हैव स्लीपिंग बैग। हैविंग सेड दैट, कैमरा ऑल्सो वॉज अ हाइंडसाइट। आई थिंक हमारे पास 2 कैमरे थे, एक में उस जमाने में स्लाइड फिल्म डलती थी और एक में प्रिंट फिल्म थी, और उस टाइम पे पहले फोकस हनुमान टिब्बा का था, तो बोथ द कैमराज वेंट इन दैट डायरेक्शन, एंड बाय द टाइम वी केम बैक और ये वो कैमरा वापस भेजा था, तो देन इवन फॉर फ्रेंडशिप वी हैड 1 कैमरा एंड 1 कैमरा फॉर हनुमान टिब्बा। तो उस चक्कर में कुछ वो हो गया, बट दैट वाज एक्सलेंट पॉइंट्स दैट यू रिमेंबर दोज स्मॉल थिंग्स। हैविंग सेड दैट, लेट्स गो बैक टू डॉक्टर सतपाल। डॉक्टर सतपाल, आपने जो 30 साल पहले क्लीन द हिमालय, हमारे एटलीस्ट हमारे सबको सिखाया आपने कि लीव द माउंटेन एज यू फाइंड इट, और आई रिमेंबर हम कितना सामान, कितना गार्बेज माउंटेन से वापस लेके आए थे। आई रिमेंबर जब हम वापस सोलांग नाला पहुंच रहे थे, यू हैड अ बिग बैग ऑफ जस्ट गार्बेज, एंड हम लोग भी सारा गार्बेज साथ साथ लेके आ रहे थे। तो हाउ वाज दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू? डॉक्टर साहब अनम्यूट करना पड़ेगा, वी कैन नॉट हियर यू। इट्स ओके नाउ। या बहुत ही ज्यादा जरूरी था ये। इनफैक्ट पूरे गार्बेज ने पूरी दुनिया की हालत खराब कर रखी है, और ये भी मैंने माउंटेनिंग क्लब से ही सीखा था। खासकर जब मैं कोर्सेज के लिए गया मनाली में, जहां भी हम कैंप लगाते थे, अब बेसिक कोर्स में, एडवांस कोर्स में, ट्रैकिंग्स में, तो पर्टिकुलरली ये कहा जाता था कि हम साफ रखें, साफ करके उठे जहां से भी जाए ना। तो दिस इज वेरी, इवन टुडे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में आज भी गार्बेज फैला घूमता रहता है। कम से कम अपने घर में मैं मैनेज करता हूँ चीजों को, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करके करते हैं हम सब लोग, और ये बहुत जरूरी है। बहुत बड़े पैमाने पे इसको, माउंटेनियर्स को कम से कम इसके प्रति बहुत संजीदगी दिखानी चाहिए, और अपनी टीम ने बड़े अच्छे से किया। कम से कम हम जितना वो कचरा हम लेके गए उससे कई गुना हम वापस लेके आए। ये मेरे लिए बहुत बढ़िया वो था एक्सपीरियंस। और डॉक्टर चोपड़ा भी, जितने भी अपने बड़ी खास थी अपने क्लब के अंदर। तो हम अदरवाइज भी जैसे यूनिवर्सिटी में कई बार इस तरीके से करते थे, नाइट ट्रैक्स में जाते थे, कहीं भी जाते थे, कोई कचरा कहीं छोड़ के ही नहीं आते थे। तो ऐसा जो माउंटेनिंग क्लब, एचयू माउंटेनिंग क्लब जो सिखाया मुझे, तो जीवन में हर रोज काम आता है। वो जो हौसला, जो हिम्मत, जो चीजों को फेस करने की, वो एक झील कुछ भी नया करने की है? और मुझे एक कवि की 2 लाइनें याद आती हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या और बात क्लब है, में से हमने काफी काम किए। जी, दिस वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस जी। Before I go back to Dr. Meenakshi and Dr. Dharm Singh, I have a surprise for everyone. There was one member on campus and in HU Mountaineering Club who helped us a lot in the preparation and also was part of the reception committee when we came back. He was the one who coordinated the whole part of receiving us when we came to the campus, and that Dr. is Dilbagi. Dr. Neeraj Dilbagi. So he is here with us, and I would like to invite Neeraj and share some of his thoughts. How did he see the whole expedition
as somebody who saw it from the outside before we left, and the silence while we were there on the mountain, and then about hearing about the success, and then planning to receive us on campus. Welcome, Neeraj. थैंक यू पवनीश, थैंक यू। सभी को नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। मैडम मीनाक्षी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर जयराज बहुत टाइम बाद देख रहे हैं। अश्विनी, हेलो। राम राम डॉक्टर साहब, राम राम। राम राम। पवनीश से तो बात हुई थी। जैसे ही डॉक्टर पवनीश ने कहा, मगर एक ही आदमी था जिसने हेल्प की थी। ये तूने अच्छा गेस कर लिया यार। डॉक्टर सतपाल खोखर, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब आप अपना कैमरा थोड़ा सा ऊपर करो, एक आधी ट्रॉफी नजर नहीं आ रही दीवार वाली। डॉक्टर रंजीत खरब की जगह बैठे हैं कौन, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। ये डॉक्टर रंजीत की वाइफ हैं, डॉक्टर मौसमी। और डॉक्टर रंजीत एक मिनट, सर्जरी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब होली पे कोरोने नहीं पड़े, रिकॉग्नाइज तो करते ये करते, पर क्या है वापिस थोड़ी हमारी नरम स्वभाव की है, मारे नींद को भिगो के तो रिकॉग्नाइज करते ही है। और नीरज इतना तो अंदाजा लगाना चाहिए था कौन बैठ सकता है वहां। हाँ जी, इतना तो अंदाजा लगाना चाहिए था डॉक्टर रंजीत की जगह पे कौन बैठ सकता है वो। कोई तो बैठे तो अंदाजा तो था ही, बस भाभी जी से पहली बार ही मिला हूं तो मैंने कहा कंफर्म कर लूं। डॉक्टर धर्म सिंह भी है। हाँ, जब आए हुए हैं, शायद वो सुन रहे हैं, कैमरा ऑफ है उनका भी। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो आई रिमेम्बर जब आप लोग गए थे ना एक्सपीडिशन पे, तो हम सारों को सी ऑफ भी करने आए थे, बेस्ट विशेस भी देने आए थे। बट एट द सेम टाइम जब हमको न्यूज मिला ना कि 2 लोगों ने हनुमान टिब्बा स्केल कर लिया है, तो फिर सबसे पहले मेरे को ड्यूटी असाइन हुई कि आप ये न्यूज़पेपर में भी दो। और फिर हमने सारी यूनिवर्सिटी में एज एग्जीक्यूटिव मेंबर मैंने सारी जगह, मेरे को याद है, एक नोटिस लगाया था। और नोटिस पहले टाइप भी मैंने ही किया था, क्योंकि माउंटेनिंग क्लब का पैड मेरे को पहले ही दे के गए हुए थे जाने से पहले। और वो लगाने वाला भी मैं ही था, कोई था ही नहीं, सब लोग तो गए थे मेन। तो सारी यूनिवर्सिटी में लगाया, उस टाइम सबको इन्फॉर्म किया कि ऐसे हनुमान टिब्बा एक्सपीडिशन जो है हमारे, तो उस टाइम पवनीश भी थे वहाँ जिन्होंने स्केल किया। तो इट वाज ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। और आज मेरे को पवनीश ने कहा कि भाई वैसे तो ये जो आज मीटिंग है वो सारे उन लोगों की है जो एक्सपीडिशन का पार्ट थे, बट इनडायरेक्टली तो पार्ट मैं भी था, क्योंकि उस टाइम यूनिवर्सिटी ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन का चेयरमैन मैं ही था। हमारे एक माउंटेनिंग, सैंडी भी याद करेगा, माउंटेनिंग क्लब की ना एक यूबीसी था, तो वो उसमें हम सारे लोग जो थे ना अपडेट करते रहते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और फिर वापस आए और जब सारे मूवमेंट शेयर किया कि कैसे कितने लोग कैसे रह गए, बहुत टफ एक्सपीडिशन था। मेरे ख्याल से उसके बाद तो अभी तक एचयू की तरफ से कोई एक्सपीडिशन गया नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में ना, अभी मैं शेयर सबके साथ करूंगा, हमारी यूनिवर्सिटी में एक एडवेंचर क्लब बना हुआ है 2-3 साल से ना, तो वो ऐसी जगह जाते हैं जो बहुत ना आसान से ट्रैक होते हैं, और फिर वो आके ना 10-10 दिन तक न्यूज देते रहते हैं। हेमटा पास चले गए, वहां कोई भी चला जाता है टूरिस्ट में। मैं कभी कभी हंसता हूँ कि मैंने कहा ये कुछ ना डेयरिंग ट्रैक भी नहीं चुनते हैं। तो दैट्स वे वी वर डिफरेंट, वी वर यूनिक। और बहुत अच्छा लगा सारों से मिलके। इनफैक्ट जब मेरे को पवनीश ने फोन किया सुबह, तो मैंने इसको यही कहा था कि भाई मैं ऑफिस में होऊंगा और मैं ज्वाइन कर लूंगा, तो ही आस्क्ड मी थोड़ा सा लेट ज्वाइन करना, क्योंकि हम एक सरप्राइज देंगे। शुरू में ज्वाइन कर लिया तो मजा नहीं आएगा। तो वो सैंडी भी हंस रहा है, बट था ही पार्ट यही कि एक सरप्राइज पैकेज होगा। और मैं ना इसको जब ओपन कर रहा था लिंक को ना, तो मैं ज्वाइन मीटिंग करते टाइम नाम चेंज करने की कोशिश कर रहा था, ये गूगल ने उठा लिया, नहीं तो मैं उस पे XUBC लिखने वाला था। वो हो नहीं पाया, इतने में ज्वाइन ही हो गया।
तो फिर लोग गैस करते कौन कौन है। फिर जयराज को तो याद है, अश्विनी को भी याद है, अवनीश समझ जाता, मैडम मीनाक्षी को भी पता है कि हमारा यूबीसी था। तो वो यूबीसी का इतना इफेक्ट हुआ कि मैंने फिर पीएचडी भी यूबीसी से ही आगे की। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किस्मत देखो कनेक्शन का। उस टाइम पे तेरा नाम तो रख दिया था हमने यूबीसी, यूनिवर्सिटी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे को पढ़ना भी जाके फिर यूबीसी में ही पड़ेगा। तो दैट कुछ नहीं वाज होता, समथिंग इंटरेस्टिंग। जब मैंने चार्ज रिलिंग्विश किया उसके बाद किसी को तो लेना था ना परमानेंटली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट वाज वंडरफुल। थैंक यू नीरज कि आज तुमने ज्वाइन किया, और बिकॉज वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू do what we did because you were our major supporter right from the beginning till the end, and the person who actually I remember जब हमारी बस वापस यूनिवर्सिटी आ रही थी, आउटस्कर्ट्स पे ही तुम स्कूटर पे पहुंचे हुए थे, और वो Yes, फिर yes. बस के साथ साथ you came to campus and और वो already planned माउंटेनिंग क्लब का फ्लैग भी था साथ में स्कूटर पे हमारे बिल्कुल पास। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो उसी चीज़ को याद करते हुए मैं कुछ स्लाइड्स इकट्ठी की हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, एंड आई वुड लाइक टू शो सम ऑफ द स्लाइड्स, एंड होपफुली वी कैन रिमेंबर सम ऑफ द थिंग्स वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। सो आज हम लोग just to showcase where our goal was to reach Bakkar Thach, which is the zone 5 of the trekking map of India. So just northwest of Manali, and we had, this was our team, I don't need to spend time on that, but when we reached our transit camp, that was Solang Nala, this was the view we got of Friendship Peak right in front of us, and we actually started off after a couple of days towards Dundi, and this was the view of the Hanuman Tibba, the first shot we got of Hanuman Tibba that day, but it was still hidden behind the clouds. Once we crossed this ridge, we could not get a clear view, but eventually we reached, these are two other climbers in front of me as we were walking towards our base camp, which was finally made behind those boulders somewhere in that area, and that is the river Byas coming out. But one thing I want to share with the whole group today is that although the Byas Kund is just behind this moraine, we at this point we didn't know where the next step will be, where we will be spending, where we have to climb the mountain from. But two important things happened that I was able to, in this expedition, touch origin of two rivers in India, and that is on one side the origin of river Byas, because this is where the Byas is originating from, Byas Kund. And once we crossed Tentu Pass, which was here, after we crossed over to the other side, we were in the Bada Bengal Glacier, which is the origin of river Ravi. So in a single expedition, we went to the origin of two rivers, and that I found was very interesting fact. Next day morning, we got a beautiful sunrise shot of Hanuman Tibba. The valley was still dark, but we could get a view. And then as the sun came out, lovely view of the mountain right after you cross the Byas, you reach Byas Kund. This is another view of Hanuman Tibba from the base camp of Friendship Peak. And for our friends who went to scale Friendship Peak, which is right up there at the top, so these are our tents. If you can see some green little dots, that is our base camp in Bakkar Thach. And we preferred Bakkar Thach because of these bushes, that there will be more oxygen here. I remember Dr. Satpal, Dr. Dharam Singh, Madam Meenakshi deliberating with our guide and saying whether we should make Bakkar Thach as our base camp or should we go to live in Byas Kund as a base camp. And I remember when Colonel Prem came to our base camp, our transit camp, that was one of the questions posed by Dr. Dharam Singh to him as well. What would you recommend, making a base here or making the base on Byas Kund? I think considering whether the mules can reach here with some of our luggage, and also there's more oxygen rich area, it's 1,000 feet lower than Byas Kund, everybody thought this will be a better place for acclimatization, and that's why we chose. But this little arrow
was this, and you can see that line where people were who went on friendship actually went through this path, and this was called ladies' leg there because of the heel. And this is the iconic picture which actually shows all the way up to Tentu Pass, that the lowest portion in this ridge, which we had to cross to get over. And I have used some animation to show how we went through this path. And from here, while going, we took this ridge, crossed the glacier again, and then crossed another small glacier. And this was where our camp one was. It was just hardly enough space to put a tent. One wrong foot while coming out, you could be down in the valley. But that was amazing place to live for a night, and then we continue our journey through this glacier and to the Tentu Pass. And the best part was we had to make it safe. We had one rope pitched here, a fixed rope here, and one fixed rope in this gully. But this cross of this glacier was done without any ropes. And I think looking back, I would have secured this part as well if I had more rope and had more choice, because I remember a couple of minor accidents happened. People slipped on this path. Even while coming back, Ranjit had a slip here. Luckily, he was able to arrest his fall with an ice axe, or else it could have been Sanjeet Rathi. He had a fall here, and a couple of other people. So maybe we need to secure this area, whole area. This is a load ferry camp 1, more load ferries to camp 1, and Fateh is seen in this picture going towards camp 1. And this was the view from camp 1, just to recall the whole scenario. And we could see at the back beautiful mountains all the way towards the Chandrabhaga range as well. This is that single tent space, camp 1. And then this is a view from Tentu Pass. And what interesting thing is the ice, our backpacks are empty because we had put all the load there, and then we're going back with empty rucksacks. And then we came back next day again with loaded backpacks to live now. And this is Yogi here. That is Rathi, Sanjeet Rathi. Sushil going back. And I think that's Sushil again coming behind Yogi to reach Tentu Pass. And this is the view from Tentu Pass of Hanuman Tibba. And we were thinking that we have come so high, already reached Tentu Pass, and this mountain still looks unconquerable. It looked like it is going to be, how can we, when we saw this, like, how can we climb this mountain? Like, how will we do it? But there were methods. So this is the Bada Bengal Glacier from where River Ravi originates. And we crossed that, went onto the Bada Bengal Glacier. We had to walk all the way. We had our camp 2 pitched here. And then for camp 3, we had to go around this ridge and then keep climbing up. Right in front of this glacier was our camp 3 climbing up. So camp 2, this is our camp 2. Sorry, the picture wasn't the best, but that's how. And this is our camp 3. It's just fast forward to camp 3. And there were, after the whole episode of bad weather for a few days, and sacrifice by Ranjit and Sandy to come back, the day they left, after in that night, the weather became clear. So this picture was taken in not that good light, but it shows our journey to the top. And while coming back, we came right through the glaciers to get back to camp 3. And this is the day we left for the summit. In this little dots are a team of Sushil, Dr. Satpal, and with them was Ganthu, because Fateh was with us. So Fateh, me and Yogi was one rope, and Dr. Satyapal, Sushil, and Ganthu was in the rope 2. And this is as we were climbing slowly more on towards the summit, just towards the summit. And we reached the dome just before the summit. And after that, this view of climbing very steep section, about 400 feet of steep section, was very interesting because we went like a caterpillar. Fateh was once visible through Yogi's legs. That's how steep it was.
and then Yogi climbing in front of me using ice climbing technique. And then I was anchoring. When I would anchor, then Yogi would move and Fateh would anchor too. So only one person was moving when two of us were anchored. And slowly and steadily we reached the summit. Last few steps to the summit. And then these are the views from the summit. We lighted some agarbatti, did some prayers, left our flag. We had a camera film where we put all the names and a little flag of HIU, and we left there on the top as a memorabilia, and then did some customary top pictures. Ridge notch from the summit on the Tentu Pass side, and that ridge can be seen from below, and that's from the top. Something very interesting. Some customary pictures, and then when we came back, Dr. Satpal had reached the dome, and they blessed us. Dr. Satpal, can you recognize yourself here? Looking much younger in this lovely picture where you're blessing me and Yogi. That is Ganthu there with rope 2, and Fateh, who was with us and led us to the top. And then we came through the glacier all the way down. But in the meantime, the two parties for Friendship Peak went and submitted friendship. But we can see all the members of rope 1 and 2 who went on to the summit on 2 different days, on the 17th and the 18th of June. And that is the team where Dr. Dharam Singh with Bimlesh, Rathi and Jairaj at the back there, they all summited on the first day. But when we came back, we had huge celebration on the base camp. That's what Sandy was talking about, the huge reception at the basic course that was going on. And here we have Gursharan sir. I can see Gursharan sir, Sunny sir, all who were there at that time welcomed us to the camp. That is me sitting there. Dr. Dharam Singh is there. Jairaj in his bandana, black bandana, is sitting right there. And then the whole celebration kept going. But this is where Neeraj had played a big role in our reception. So he was talking about how he arranged our welcome on campus. And we were welcomed like I've never seen that kind of welcome reception ever again. The kind of reception, and the whole university, students, faculty came to wish us. But I can see the sunburnt faces. Everybody's faces are absolutely sunburnt. And especially me and Yogi were absolutely, we had charred faces. But that was a beginning to many more adventures, and many more adventures continue for many of us. And actually it paved the way that we found motivation and inspiration from this experience, and continued taking challenges as an expedition and overcoming them one by one. As life brings more challenges, we look at it like an expedition. We focus our energies on solving it and making it a mission about it. So I'm really glad that we are here today celebrating 30 years and also talking about the successes that led us to this important day. I'm little worried that Ranjit has not been able to make his way up here. Any thoughts? Anybody wants to share something? Madam Meenakshi, Dr. Dharam Singh, Dr. Satpal, anything you would like to add? परनीश, ये जो सारा आपने दिखाया, इट वाज जस्ट, मैं मिनट बाय मिनट इसको जी रही थी. ऐसा लग रहा था जैसे वही है, और एवरी मिनट सो फ्रेश, बिल्कुल ऐसे ताजा आंखों के सामने आ गया. आई रिमेम्बर कि वो कुकिंग वाला पार्ट जो था, मैं और हम 2-3 स्टूडेंट्स, मैं, रवि और ये रमेश, वो मिलके करते थे खाने वाला काम जब था. तो खाना पकाने में जो है वो बड़ा मुश्किल होता था. कई बार तो आग ही नहीं जलती थी. कुछ तो हमारे पास रेडीमेड चीजें होती थी. चाय बनाने, अभी मैं चाय पी रही हूँ तो मुझे वहाँ की चाय याद आ रही है. और वहाँ वो एक स्टीम सा था, छोटा नाला सा था, जहाँ बैठ के रजनी और मैं, हम जो है ना, आप लोगों का इंतजार कर रहे थे. मैंने भी कैंप फेरी में शायद 2 फेरी के लिए 2 ट्रिप लगाए थे टेंट के पास तक, और उसके बाद तीसरे जाने की शायद हिम्मत नहीं हुई. और ये जो सारा वहाँ का सीन था, स्पेशली रात के टाइम में जो था ना, इतना सुंदर लगता था. और उस टाइम में हमारे पास एक मोबाइल कैमरा थे नहीं, एक छोटा सा कैमरा था, वो भी मेरा खराब हो गया वहां पर, उसमें पिक्चर नहीं ले पाई थी. लेकिन अभी वो सारी पिक्चर्स देख के वो सारा कुछ फ्रेश याद आ गया मेमोरीज में. तो बिमलेश, और जब हम टेंट के पास जा रहे थे, तो ये जो पहले हमने देखा व्यास कुंड,
आपको याद हो तो वहां हमें एक डेड बॉडी मिली थी, वो 15 साल के बाद शायद रिकवर हुआ था वहां से। हम जब वहां देख रहे थे तो एक डेड बॉडी 15 साल के बाद एज सच वहां पे, वो कुछ आर्मी वाले एरिया थे, उनका बेस कैंप था वहां पर। तो उन्होंने बताया कि 15 साल के बाद पहले फोटो खींचा, कोई टूरिस्ट वहां गिर गया था, उस टाइम में मिला नहीं, और सेम डे उनकी उसकी बॉडी वहां से रिकवर हुई थी, आई रिमेम्बर स्टिल। तो थोड़ा डर से भी लगा था कि वहां से हम कैसे निकलेंगे। और वो जो पीक थी जो ग्यासकुंड से हम टेंटू पास की तरफ जाते थे, इट वॉज वेरी स्टीप। और जब वो ग्लेशियर का वो 3 घंटे का रास्ता था, तो मैं अभी अ, जब मिनेसोटा गई अपने पोस्ट डॉक में, तो जैसे रोज मुझे उस बर्फ से जाके मेरे घर से लेके और लैब तक का वो रास्ता था, तो एवरी डे आई रिमेम्बर टेंटू पास, कि हम टेंटू पास में रोज जाते थे। फिर हम जी वहां जी गए थे ये हेमकुंड साहब, तो वहां जी भी जी हमने, मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी। वहां भी एक कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई नीचे गिर गया था, और जब हम वापस आए तो उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई। तो बहुत सारी लेडीज भी थी जिनको पवनीश ने, योगी ने, और और भी ये रवि था, सबने रेस्क्यू किया, धीरे धीरे हाथ पकड़ के उनको वहां से पास करवाया था। तो ये इतने सारे मोमेंट्स हैं कि मुझे धीरे धीरे जो है सारे याद आने शुरू हो गए, जैसे पवनीश को स्लाइड्स दिखा रहा था। तो पवनीश से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये हमें भी शेयर कर दीजिए जो है ना आज की जी मैम प्रेजेंटेशन जो है। और जी इसका एक जो है, जो मेरे एक्सपीडिशन का सबसे बड़ा आउटकम क्या रहा, कि आई डिडंट नो कि आई वाज ऑन फैमिली वे दैट टाइम। जी जी तो जैसे ही मैं वापस आई, तो कुछ वो फीवर सा कुछ था, और पूरा टैन हुआ था, सारे नाक में पपड़ियां जमी थी काली काली। तो जी जी आई जस्ट वेंट फॉर चेकअप। तो मिसेज वाले थी जो बायोकेमिस्ट्री में, डॉक्टर वाले जो उनकी वाइफ थी गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया मैडम आपने जो है ना अब सीढ़ी नहीं चढ़नी है। मैंने कहा मैं तो अभी 16,000 चढ़ के आ रही हूँ। तो दैट वाज वेरी फनी जोक जो। और जी वो मेरे बेटे में कहते हैं ना, वो बाय बर्थ, उसके बाय बर्थ है, वो एवरी टाइम, नाउ ही इज इन यूएस, उससे पहले वो पासिंग इंस्टीट्यूट में पीएचडी करा था। तो एवरी ऑफ एंड ऑन जब भी उसको टाइम मिलता है, उसके पास टेंट है, स्लीपिंग बैग है, वो जो है ना ये चला जाता है माउंटेन्स के ऊपर। तो ये जो मेरा एक्सपीडिशन का सबसे बड़ा आउटकम मेरा बेटा है, जो बिल्कुल सेम पनीर, उसको देख के मुझे पनीर की याद आती है कि पनीर कितना थैंक यू एक्टिव मैम रहता है, जहाँ जहाँ चलते हैं वहां चलते हैं। और तो दैट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, स्पेशली फॉर थैंक यू मी। और उसके बाद तो कुछ, मैं अभी इजिप्ट गए हुए थे, तो वहां जाके जब हमें वो रेत में चलना पड़ा, तो उसको मैं बता रही थी, मैंने कहा ये तो रेत है, हम वहाँ ऐसे बर्फ में चले थे। तो मैं कमनीश को और मेरे साथ रजनी थी, रजनी और कोयल, उनको याद जी करी जी थी। मैंने तो उनको हाथ पकड़ पकड़ के हम जो है ना वहां तक पहुंचे थे, जो सेकंड वाला फेरी थी, लोड फेरी। जी जी और वहां जाके जब हम नेक्स्ट फेरी में गए, तो वहां सब कुछ जम चुका था, जो भी था पानी था। और वहां हमने चाय पीने का मन हुआ, तो हमने शायद थोड़ा सा मेल्ट किया था पानी पीने के लिए, तो मुझे तो जी एक्सपीरियंस। और उससे इतनी इस एक्सपीडिशन जाने के बाद, जैसे रवि बता रहा था कि कहीं कुछ भी करना हो ना मुश्किल नहीं लगता है। अब मैं एवरी अदर डे, महीने 2-3 मेरे टूर लग जाते हैं, और इस एज में कोई जाना चाहता नहीं है कि रोज ट्रेवल करो। लेकिन मुझे जरा भी सेकंड थॉट नहीं आता कि मैं नहीं जाऊं। अभी मुझे कल भी एग्जाम जी में जाना है, उसके बाद 21 को भी जाना है। तो आई वाज कीप ऑन, क्योंकि इसी के बाद इतनी आदत हो गई ट्रैवल करने की, घूमने की और चलने की, कि अब आलस ही नहीं आता है, कि लगता ही नहीं कि एज कोई उसके ऊपर असर भी डाल रही है। तो और सबसे जो है रंजीत और इनसे, जैसे आज मैं जयराज को नहीं पहचान पाई। वो जो है उस टाइम में तो बिल्कुल लीन एंड थिन होता था, बिल्कुल छोटा बच्चा था। आप देख के उसको, मैं एक बार तो जब नाम पढ़ा तब लगा कि हाँ जयराज है, अदरवाइज मुझे मिलता तो मैं उसको पहचान नहीं पाती। लेकिन उस टाइम में सब अ- ने अ- इतना अच्छा काम किया था एज अ टीम, कि किसी को किसी की चीज की कमी महसूस ही नहीं होती थी। और एक जैसे कोई थोड़ा सा लो होता था, किसी का मोरल दूसरा इतना बूस्टर करता था कि वो लगता था कि हम नहीं अभी चलते हैं, चलो अब कल की भी वेट नहीं करेंगे, चलो अभी शुरू कर देते हैं। तो इतनी ज्यादा मोटिवेशन थी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी। और जो ऑक्सीजन, मुझे याद है जब एवलांच आया, तो हमारी टीम के कुछ मेंबर्स थे, हम वो स्लाइड ही बना रहे थे, वो जो पॉलिथीन के ऊपर ऐसे नीचे स्लाइड कर रहे थे, मैं थी, रजनी और गोयल। तो देखा कि ऊपर से वो बर्फ गिरनी शुरू हुई, तो एक कैंप जो है ना वो वाइंड अप करे थे, तो एनएसएस का कैंप था या एनसीसी का कैंप था।
तो उन लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया था, उनको साइड में ले जाके, नहीं तो वो सारा वाइप आउट हो जाते स्नो के साथ जी ही। जी, तो दैट वाज द लाइव एक्सपीरियंस ऑफ एवर लॉन्चिंग माय लाइफ। अमेजिंग इससे पहले एक्सपीरियंस, हमने थैंक यूनिवर्सिटी में मूवी देखी या थी, याद है माउंटेनिंग क्लब ने मूवी दिखाई थी लॉन्च के ऊपर एक, सारे जी उसमें जी आए जी थे। जी, तो उसको बिल्कुल देख के तो वो उसकी जो ट्रिगरिंग हुई ना, उसको जब हमने मूवी देखी थी तो उसकी मुझे कुछ रिलैक्सेस याद थे कि ये ट्रिगर हो रहा है, अब लॉन्च आएगा। तो मैं उसको गोयल को बोला, मैंने कहा देखो ये अब लॉन्च आएगा शायद। तो उसने कहा कि हाँ मैडम। तो इतने में देखा कि वो कुछ लोग वहाँ बच्चे थे, गर्ल्स भी थे और बॉयज भी थे, तो उनको हमने अलर्ट किया, जोर से उनको वेट किया और उनको हमने फिर साइड में खींचा जब वो नीचे आ रहा था बर्फ। जी जी, तो नहीं वंडरफुल, और जो उस टाइम का जो एक एंथुजियाज्म था, उस टाइम की जो एनर्जी थी, वो मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं ना वो फिर वापस आ जाती है वापस हमें, आ और जाती हम है, वापस आ जाती है। मैं वैसे तो कम ही बिल्कुल हुई, बिल्कुल, लेकिन और वापस या आ गए तो ज्यादा या एनर्जेटिक फील करते हैं। और इसी बात पे, दिलबागी से मैं मिली रहती हूँ, हाँ दिलबागी, जी हाँ और जी, हम कई बार याद करते हैं, ये रवि से भी मिल लेते हैं, बाकी लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती है। एक दो बार सतपाल से भी मिली हूँ मैं। जी तो बाकी लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा, वो सारे मोमेंट्स, बहुत मेमोरीज जो है फ्रेश हो गई उनको देख के। और जैसे अभी हम ये जो कचरे वाली बात कर रहे थे, तो अभी हम इजिप्ट गए थे लास्ट ईयर अक्टूबर में। तो एक बीच पे गए थे, तो वहां पर जो है हम लोगों ने, एक कपल आया हुआ था वहाँ जर्मनी से, तो वो देवर कलेक्टिंग सम प्लास्टिक बॉटल्स। तो मी, माय सन एंड डॉक्टर गैब साहब, हम लोगों ने भी उनकी हेल्प की। तो नीचे जाके वो वहां से बॉटल्स और पॉलीथीन और काफी सारा कचरा इकट्ठा करके एक बैग में उनको डाल के दिया। तो भर के दिया, वी ट्राई, जहां भी जाते हैं अभी भी लगता है कि जहाँ कचरा है वहां से थोड़ा उठा के उसको साइड में डाल दें, चाहे वो कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो, खासकर इधर मनाली और माउंटेन्स में जब भी जाएं। जी जी, तो वो एक हम, जो वहाँ हमने एक अच्छी चीज सीखी थी, वो अभी भी कंटिन्यू है, हैबिट्स वही हैं और बेटे की भी वही है। तो उसको देख के लगता है कि बचपन में वो जो हमें देखता था, तो ऑल दीज आर इनकलकेटेड इन हिम आल्सो। और माउंटेनिंग वाला तो पार्ट बहुत स्ट्रांग है उसमें, वो बहुत एक अच्छी रेयर पिक्चर्स भेजता है। और या जंगल में कोलोन, वो जर्मनी के जंगल में कोलोन वाले में अकेला ही है, एक टेंट में लगा हुआ, वो बैठा हुआ है, उसने वहां की फोटो भेजी रात में। तो ही वॉज वेरी सो नाइस, एडवेंचरस और डेयरिंग बहुत है। तो उसको देख के कई बार मुझे डर भी लगता है कि हम तो देख नहीं रहे उसको, तो क्या कर रहा होगा। लेकिन उसको देख के मुझे पमीश की याद आती है कि पमीश भी तो ऐसे ही था बिल्कुल। तो इट वॉज सो थैंक वंडरफुल। यू मैम, आज आज इकट्ठे थैंक यू हुए मैम, तो आई एम थैंकफुल टू ऑल, या स्पेशली पमीश हु ऑर्गेनाइज दिस मीटिंग। एंड डॉक्टर धर्म मैम, सिंह को देख के बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छा लगा। उनको तो मैंने बहुत सालों बाद देखा है। तो हम इतने बिजी हो गए हैं अभी अपनी लाइफ में कि हम एक दूसरे को मिलना, पता है कि कौन कहाँ है, फिर भी नहीं मिलते हैं। दैट इज नॉट गुड थिंग, वी शुड बी इन टच वेरी फ्रेंडली। यस तो संदीप फॉर मुझे श्योर, मिला था एयरपोर्ट में, तो इसको मैंने पहचाना नहीं था, इसका पूरे बाल मुड़ गए थे। कहता, खड़ा हो गया मेरे आगे, कहता मैडम मुझे पहचाना। मैंने जब वो स्माइल किया ना, मैंने कहा तो संदीप है। कहता आपने कमाल है, 30 साल के बाद भी पहचान लिया मुझे। तो इट वॉज वेरी दैट इज अ गुड। गुड थिंग। तो सैंडी हम तेरे पास आएंगे अभी, क्योंकि तेरे अभी कुछ और सुनना है तेरे से, बट पहले डॉक्टर धर्म सिंह के पास। डॉक्टर सर, आई नो यू हैव बीन पेशेंटली वेटिंग एंड देयर इज मोर, लॉट मोर यू वुड लाइक टू से, सो सर इट्स ओवर टू यू। सर यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं सर, आपने कैमरा ऑफ हो गया, ऑडियो ऑन करना है सर। We're just waiting Dr. Dharam Singh to turn on the camera. And hi Rubal. Yes. Hello, Dr. Yeah. Pawneesh. हाँ सर, you are back Hope, live. hope hearing me. हाँ सर, yes. Yes, sir. Are friends. Once a leader, always a leader. And for this, I am referring to or using this phrase for Dr. Pawneesh. Once a Thank you. leader, always a leader. It is all because of him. We are here today celebrating, meeting, greeting, and sharing so many things. My appreciation, my rich thanks to all of you, and on top of it, to Dr. Pawneesh. Without you, Dr. Pawneesh, all these things could not be done.
So you are carrying, you are the torch bearer, and you have carried us all through all these decades. And the reference, I missed many references, and I think now, having listened to you and having listened to your beautiful description of the whole story, the total प्रयास 93, ये प्रयास एक लेवल पर क्या कितने लेवल पर ये स्ट्रगल था अपने आप में, रेजिंग ए टीम, सेलेक्टिंग ए टीम, रेजिंग फंड्स, मैनेजिंग फंड्स, and then reaching Manali, reaching Dundi. Dundi is a place where you have the Atal Tunnel, and then Dundi to another climb going to on your left Seven Sisters. Then you are reaching Bagartats, and then the story that you narrated. Behind all this, the sport of your very good friend, represented by Dr. Meenakshi today, our Dr. Kharab, Dr. Patu, by love you call him, his sport and is behind the camera and behind the struggle. I appreciate his gestures and all the help that he rendered. Dr. Sandeep is another right hand. He had been through and through so lovely, so jocular and so humorous. He will cut a joke here and there and will make people laugh and repel all the tensions on the way. Danda, Ravi, they have their own beauties, and without Ravi, many things could not be managed. And even after this prayas, and we had many high altitude trackings with him, where every day in every tracking, high altitude tracking, he had been a big game player. So I appreciate, and Dr. Pawneesh, one reference that you made of Dr. Yogi, Dr. Shakir Josan, when you were on the summit camp, one day, Dr. Yogi, as told by you, and the night you moved outside and you were looking for him, where is he? But then you could find him when he came back. You said he had got suffered some hallucinations, and when you asked, where had you been? कि बाबा ने बुलाया था, मैं बाबा से मिलने जा रहा था. Baba ने भेजा, इसको आशीर्वाद दिया, and the next day he is submitting. So my congratulations to Dr. Yogi and to all of you. I remember this reference. And then in one go, in one Priyas 93, we went for one peak, but because of the cooperation and because of the technical guidance, beginning with you and all other friends, we made it to another peak, because all these guys at Bagartas, at base camp were feeling miserable, or they were finding that you are good for nothing and you couldn't do anything. And other friends, they have made it to the top, and they will be in a great success back. They will be received with great flags of the University of the Mountaineering Club, and what good you are. And in the process, we could think of it, and that could materialize. But on this way, when we were climbing a 60-yard patch of glacier to Friendship Peak, I was not given the rope by the last man, that is Sandeep Rathi, and I was upside down on the wall. Oh. But before that fall, I could sound the guide man fall, and he could anchor it. It was just a 60-degree, 70-80 meter, wall of the ice. Yeah. And I was upside down, and they all were worried what will happen to sir. I said, nothing will happen. Just relax, just help me. मेरी जो पैरों में जूते में जो फंस गए हैं रोप, इसको पहले निकालो, and then lift my body, and let me change my leg position and come down. It took us some 10-12 minutes, but we could do it, and then we didn't lose heart sight, nothing. बोले सर क्या करना है? मैं कहा जाना है, ऊपर जाना, करना क्या है इसमें? No going back, and then we climbed that patch and then reached to the top and made all those puja. जो top पर बिल्कुल नहीं बैठते, थोड़ा मान सम्मान देते हैं peak को, and धूपबत्ती लगा के paid our respects to the peak, to the Himalayas, to the Hanuman Tibba, to Baba Hanuman ji, and slowly came down. And reference was made कि sleeping bag बीच में नहीं थे, आगे पीछे. That was another big issue.
But I can write a book if I am to write a book. But for that, Dr. Pavnis has to take a lead. Each one of you deserve one chapter in that book. Each one of you, for your own good things, for your nicety, and for making this, a success. So my thanks to each one of you, from the core of my heart. Dr. Meenakshi, yourself, the leader always, Dr. Pavnis, hats off to you, my boy. God bless you. My Sir, best my wishes. pleasure. And my regards and my love to all of you. Very many thanks for making my day today. I am plus 75 and still look forward to meet you, greet you, and go to the mountain and the Himalayas. Himalayas are so beautiful. But after this Prayas 93 made me a mountaineer for another 20 years, and I had been going and crossing this pass, that pass, and reaching 17,000, 18,000, and this and that. That made me all this. But for this, Pavnesh, you deserve a big credit. My thanks, appreciation. Thank you so much. My pleasure, sir. And you are absolutely right. We should venture into writing collective memories about this expedition. That's a takeaway message. But before we say final goodbyes and wrap this event, I know there were a couple of funny incidents that happened on the expedition. And one of them I want to start, and then everybody can share the funniest thing they experienced on the track. So the one dialogue which I remember absolutely a lot is after the number of load ferries we did, somebody, I think Sandy suggested, called everybody should charging mule charges. So although we were humans, he said कि हमारे को mule charges because they were giving money for the mules we brought to the base camp. So once we started the load ferries, say we are working more than the mules. Why are we not getting the mule charges? So that was one of the that mule charges kept going till the summit. Because आज मुझे कितना mule charge मिलेगा? So that was something I remember distinctly. But over to Sandy, maybe you want to wrap up with something funny or maybe a song. You sang so many good songs you kept our spirit high during the trek. नहीं, ये मैंने आपने देखा हो कि मैं इसको इतना वर्चुअली आपने किया, मैं वाकई मैं इसमें डूब गया. मेरे को भी ये जैकेट पहननी पड़ी है, मेरे को ठंड लग गई आपकी स्लाइड देख और वो हाई एल्टी वाला इंसिडेंट मुझे याद है. 10 टू पास पे इनफैक्ट जब हमने 10 टू पास पहुंचे तो लीड में मैं और फतेह थे, तो मैं सबसे ऊपर पहुंचा. मेरे जस्ट बाद डॉक्टर भुवनीश आए थे, तो ऊपर जाते मैंने ऐसे एक्ट किया था क्योंकि नीचे से जब हम शुरू हुए थे, लकीली मैंने बेसिक कोर्स वगैरह किया हुआ था, लेकिन एक हाई एल्टी नाम की बहुत टेंशन थी हम सबके दिमाग में कि ऊपर जाके पता नहीं क्या हो जाता है. तो मैं और पवनीश वहीं से जब हम अपने एबीसी कैंप से जब चले, एडवांस बेस कैंप से, तो ये था हाई एल्टी नहीं हो जाए, जाके ऊपर हाई एल्टी नहीं हो जाए. तो हम ऊपर पहुंच गए 10 टू 5 पे और बाकी टीम अभी पीछे थी, कुछ हो नहीं रहा था हाई एल्टी. तो मैंने वहां फिर एक्टिंग की थी. इफ यू रिमेम्बर डॉक्टर भुवनीश, मैंने बड़ी एक्टिंग की कि मुझे कुछ हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ, मुझे ये हो गया वो हो गया. और डॉक्टर भुवनीश को 2 सेकंड के लिए लगा कि ये सीरियसली इसको कुछ हो गया है, लेकिन इनको मेरी नेचर मालूम थी. बोले सैंडी एक्टिंग कर रहा है, इसको कुछ नहीं हो. वो एक चीज थी. और तीसरी एक चीज मैं पूछना चाहता था, डू वी अ सर्टन, क्योंकि कैमरा मैन एक हमारे साथ गए थे, तो एक तो हम इस मीटिंग में उनको भी थैंक यू करें, उनको भी याद करें. वो काफी दूर तक वीडियो रिकॉर्डिंग जो थी, ब्राउनी पॉइंट्स फॉर एनीबडी हु कैन रिमेंबर हिज नेम, उसको स्पेशल प्राइज मिलेगा आज. He was from Alipur, Delhi. I don't remember the name. Alipur Delhi से था. हाँ, अविनाश जी. Ravi, तेरे को brownie points. His name was Avinash. Yes. Yeah. Avinash. He is right. Good. तो Ravi पूरे नंबर ले गया. Avinash from Alipur. एक हम थैंक्स अपने पूरी टीम की तरफ से करें, जो हमारी बस के जो ड्राइवर थे, उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि हम लोग सब ऊपर बिजी थे, सब कुछ कर रहे थे. वो मनाली में अकेले जो है वो मैनेज कर रहे थे पूरे का पूरा, रहना खाना जैसे भी उन्होंने किया होगा, तो उनको भी हमारी तरफ से थैंक्स है. ये हमारे बट आई वुड सजेशन है कि डॉक्टर पवनीश के लिए हम सब एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाएं,
ये नहीं जो यार, कुछ नहीं। और उनसे एक रिक्वेस्ट करें कि अब अगले एक्सपीडिशन इनका ये है, अगला टास्क कि नेक्स्ट 17th of June 2024 को कैन वी प्लान टू हैव अ गेट टुगेदर इन मनाली। मनाली में हम इकट्ठे हों और जितना छोटा मोटा चाहे अपनी उम्र के हिसाब से हम कुछ ट्रैक करें या कुछ करें, बट चाहे फॉर 3 days 4 days तो ऐसा कुछ। सॉरी टू इंटरप्ट, इस टाइम में इतना रश होता है वहां पर, बहुत रश होता है, ये छुट्टियां होती है ना बच्चों की, तो आई डोंट एचयू नो में मिले, एचयू में मिले हम यार। एचयू में मुझे अभी याद है हमारी तैयारी में सबसे मुश्किल पार्ट होता था बेसिक साइंस की, वो जो सीढ़ियां चढ़ना दौड़ करके बिना हाथ लगाए हुए और फिर रैंप से वापस आते थे, तो वो वाले मोमेंट्स एक बार दोबारा करेंगे। बैग में ईंटें भर के who remembers the complete exercise schedule? हम लोग क्या कहाँ से शुरू करते थे और क्या करते थे प्रेपरेशन से पहले? Who remembers it? That's a quiz question for बेसिक साइंस में जब वहां गैदर होते थे और सबका बैकपैक, खाली बैकपैक लेके आते थे अपना अपना, उसमें 4 ईंट डालते थे और एक बार तो रैंप से जाते थे सीढ़ी से वापस, फिर सीढ़ी से ऊपर रैंप से वापस, ऐसे करके 10 राउंड्स तो ये रहते थे और वो करने में बहुत मगर वो सेकंड स्टेप था, वो सेकंड स्टेप था। पहला स्टेप था क्रिकेट ग्राउंड के 4 चक्कर, 6 चक्कर रनिंग, 6 चक्कर, हाँ 6 चक्कर। उसके बाद वहां से भागते हुए जाना बेसिक साइंस, और बेसिक साइंस में फिर मैडम वहां पे नीचे स्टोर में वो बैकपैक्स रखे हुए थे ईंट भर के, वहीं नीचे स्टोर में थे वो, और वो रहते थे। फिर ऊपर जाते थे सीढ़ियों से और रैंप से भागते नीचे आते थे, फिर सीढ़ियाँ 10 राउंड्स उसके करते थे। उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ ऐसे कूलिंग एक्सरसाइज करके फिर वापस हॉस्टल जाते थे, नहीं शॉपिंग सेंटर जाते थे। डॉक्टर धर्म सिंह का मुझे याद है बीच बीच में रैपलिंग किया बेसिक साइंस की बिल्डिंग में ऊपर से रोप से नीचे, वो भी करते थे, वो भी करी हुए। और क्रिकेट ग्राउंड में हम दौड़ते थे तो हम तो सब यंगस्टर थे, लेकिन डॉक्टर धर्म सिंह ने एक भी दिन हमसे एक भी स्टेप कम नहीं दौड़े थे, ये मुझे आज भी याद है। हम लोग 6 राउंड भागते थे, डॉक्टर साहब 4 रॉक ऑलरेडी भाग चुके होते थे, या हमारे बात कहते थे तुम लोग चलो मैं और अभी 4 चक्कर काट के आऊंगा, और खत्म ही नहीं करते थे सर। That was great. Yeah. वो अभी भी याद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Any other funny incident anybody else wants to share? योगी, तुम्हारे को क्या फनी इंसिडेंट याद है? अनम्यूट करो, अनम्यूट। जब मुझे हनुमान जी मिले थे और मैं वापस आता डर के मारे कि कहीं डॉक्टर परवनीश फिर ना भेज दें। या दैट वाज समथिंग। हम लोग पहले घबरा गए थे क्योंकि ये जैसे जैसी बातें कर रहा था वापस आके, तो हमें लगा इसको हाई अल्टी हो गई है, और इस बार ये ड्रामा नहीं कर रहा है जैसे सैंडी ने 10 to पास पे किया था, और ये बड़े अजीब सी बातें कर रहा था कि मेरे को हनुमान जी मिल गए थे और मैं उनसे बातें करने लगी, क्योंकि हम पूछे तो कहाँ रह गया था, इतनी देर क्यों लगी तेरे को वापस आने में? तो ही सेड मेरे को हनुमान जी मिल गए थे। तो हमें लगा इसको हाई अल्टी हो गया, हमने इसको अंदर टेंट में डाला, सूप वहाँ पे बन रहा था, उसमें मैगी बन रही थी, तो फटाफट इसको गर्मा गर्म सूप दिया, मैगी खिलाई, पानी दिया। डॉक्टर सतपाल भी मेरे साथ थे। हम लोगों ने इससे पूछ रहे हैं कि उंगलियां कितनी है, इसको लगा कि विजन प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको हाई अल्टी तो नहीं हो गया, इसको वापस उतारे माउंटेन से। इसको पूरा इसका आइज में टॉर्च डाली, इसका डायलेशन देखा, कंस्ट्रक्शन देखा, इसकी पल्स रेट देखा, सब कुछ इसका किया। फिर इसको स्लीपिंग बैग में डाला, इसको स्लीपिंग बैग में कि इसको वार्म रखने के लिए। फिर इससे दोबारा बात करी तो फिर कंसिस्टेंट स्टोरी चल रही थी इसकी, ये सेम टू सेम। फिर मैंने कहा, फिर कहता है कि नहीं मगर मेरे को हनुमान जी ने बोला सब ठीक हो जाएगा। और तब तक तीसरा दिन था जब बर्फ़ पड़ रही थी, मतलब वी हैड ऑलरेडी वेटेड फॉर 2 days एंड वी वर रनिंग शॉर्ट ऑन फूड एंड दैट्स व्हाई यू गाइस हैड लेफ्ट। तो कहते नहीं मगर उन्होंने बोला है सब ठीक हो जाएगा। तो अब वो बात करते करते हवा इधर से फट कर रही थी टेंट में, और थोड़ी देर में हवा इधर से फट करने लगी। तो एकदम से दिमाग में आया कि हवा का डायरेक्शन बदला है, हो सकता है मौसम ना बदल रहा हो। और हमने ऐसे टेंट से निकल के यूँ ऊपर देखा आसमान में, और देखा कि ब्लू स्काई दिख रहा है कहीं कहीं बीच बीच में, और वो एक हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। हम बाहर आके ऑलमोस्ट डांस किया वहाँ पे कि, और लिटरली इसको थैंक यू किया। और ही वॉज एब्सोल्युटली, मतलब जैसे इसने आके बोला है कि मेरे को हनुमान जी मिले और उन्होंने बोला है सब ठीक हो जाए। अच्छा, इसने शिकायत की है पहले हनुमान जी को
कहता मुझे हनुमान जी मिल गए और मुझे पूछा कि कहाँ भटक रहे हो, ये एग्जैक्ट वर्ड थे इसके कि कहाँ भटक रहे हो। और ये भी बड़ा स्मार्ट है, कहता है हनुमान जी हम तो आपको मिलने आए थे, आप तो मौज आपने तो हमें बर्फ़ में दबा रखा है। जैसे ये डायलॉग मारता है ना, वैसे ही मारा है इसने हमारे को आगे। कहता मैंने तो बोल दिया कि इतने दिन हो गए और हमारे को आपने बर्फ़ में दबा रखा है। तो उन्होंने बोला नहीं सब ठीक हो जाएगा। कहता है मैंने कहा फिर इतनी देर क्यों लगी? कहता मैं वो गायब हो गए तो मैं ढूंढ रहा था उनको। देखो याद ही होगी, यू स्पेंट रनिंग फ्रॉम वन रॉक टू द अदर ट्राइंग टू फाइंड कहाँ गए हनुमान जी, इसलिए इसलिए देर हो गई थी। बट रिमार्केबल विजन यू हैड और रिमार्केबल स्टोरी, समथिंग फॉर अस टू रिमेंबर एंड almost feel that divine presence on that mountain which was connected to Hanuman ji. JD, what was the funny incident for you? Sorry ma'am. मैंने कहा हाई आल्टी तो I- रवि और रमेश के बीच में बहुत होता था। मैं इनको शांति करती रहती थी कि चुप हो जा, एक जने को हटाती थी दूसरा शुरू हो जाता था, तो रजनी वो भी बीच में मीडिएट करती थी। लेकिन रवि और इनके हाई आल्टी रहता था, तब वो इतना यूज करते थे हाई आल्टी हो गया। और रमेश गोयल को तो रहता ही था, वो बहुत ज्यादा एकदम से हाई हो जाता था किसी भी बात में, जी सेंसिटिव था तभी वो। और रवि भी बहुत सेंसिटिव था, तो एक दूसरे को ये कुछ ना कुछ काट पीट करते रहते थे। जी JD, any funny incident you remember? संजीत राठी। राठी नहीं आओगा, राठी आओगा। राठी नहीं आओगा। रवि, व्हाट अबाउट यू? तेरे लिए क्या फनी था? ये डॉक्टर संदीप को बोलो गाना सुनाएंगे, वो थोड़ा आप कह रहे थे बीच में वो पूरा नहीं हुआ। फैंडी अब तो गाना बनता है भाई। ओके नहीं, ये जो एक्सपीडिशन था इसकी जो सीख थी और उसके बाद जो मेरा फेवरेट रहा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जीवन की सच्चाई भी है। 2 लाइनें सुना देता हूँ। डॉक्टर पवनीश ने कहा है, हुक्म हुआ रवि का, मेरे सबसे प्यारे भाई का, छोटे भाई का छोटा बच्चा है रवि हमारा। एक ये जो आपने नया नाइकी का अपर पहन लिया, ये भी भिजवा देना एक कोरियर से। तेरी आदत गई नहीं अभी तक। क्या करे। जैसे मैं कह रहा था कि कोई इंडिविजुअल हार जीत नहीं होती है, टीम का होता है जो कुछ भी होता है। तो वो जो बड़ी अच्छी लाइनें हैं, तो वहीं से शुरू करता हूँ कि ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। एवरीबॉडी, ये जीवन है, जीवन का यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है छाँव धूप। वेरी नाइस सैंडी, मजा आ गया। आपको भी सुनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं ना इससे काम चलेगा। मैं लास्ट में सुनाऊंगा, लास्ट में सुनाऊंगा जब अब रंजीत का वेट इसलिए करते करते देखो ये इतना टाइम हो गया कि रेगुलर कि हाँ वो है। बट उससे पहले डॉक्टर सतपाल से पूछना है कि व्हाट्स द फनीएस्ट इंसिडेंट। डॉक्टर साहब आपके नजरिए से क्या सबसे फनी था? डॉक्टर पवनीश, रमेश बार बार एक बात बोलता था, घाट बार। हाँ बार बार बोलता था वो। और एक दिन ऐसा था कि रमेश और संजीत खड़े थे साथ साथ, और रमेश ने घाट बात की तो डॉक्टर धर्म सिंह ने कहा घाट बाद, रमेश घाट बाद। दोनों की बॉडी साइज में बड़ा फर्क था ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आज भी यही हो गया था कि राठी आओगा राठी नहीं आओगा। तो वो जो ट्रेड उस टाइम का है वो आज तक चल रहा है कि भाई राठी आओगा, वो कोई कहता है राठी नहीं आओगा, कहता राठी आओगा।
पवनीश तो वो घाट बाद बड़ा बड़ा याद आता है। वैसे ना ये दिलबागी के भी 2-4 जोक सुन लो, ये बहुत अच्छी जोक सुनाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैडम जोक तो अब टाइम निकल गया, अब याद नहीं आते, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तुम 20 दिन के लिए गए थे तो ही मैं बहुत बिजी था, न्यूज आती थी तो मैं कुछ ना कुछ करता रहता था पीछे से। सोचो मैडम कह रही हैं उस टाइम मोबाइल नहीं होते थे, मोबाइल होते तो ये 10-10 मिनट में एक रील बना के भेजते रहते, मेरे को तो ये जीना ही सही बात है, वो तो शुक्र मनाओ उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी सेल फोन वगैरह नहीं थे, नहीं तो तेरी रेल बनी होती भाई। ये सेल फोन से याद आया सर, एक थैंक यू डॉक्टर पवनीश, एक थैंक यू हरियाणा पुलिस के लिए भी हम तालियां बजाएं। उस समय उन्होंने वॉकी टॉकी दिए थे आपको, हाँ तो बिल्कुल उसने बहुत मदद की थी बिल्कुल। हमारी उस वॉकी टॉकी ने। वो पवनीश और ने उससे मैनेज किए थे। हाँ, मगर उसके लिए थैंक यू जाता है टू टू जीजा जी एंड दीदी की, उन्होंने अरेंज करवाया। बट सबसे बड़ी बात ये थी कि उससे जहाँ हमारी हेल्प होनी चाहिए थी वहाँ कई बार हेल्प हुई, स्पेशली जब हम सबमिट से थे और हमारे को खबर देनी थी कि सबमिट कर लिया है। तो उस टाइम पे जब हम सबमिट पे आके, और हमने ये प्लान किया था कि एवरी आवर हम एक बार सेट खोलेंगे, और लकीली उस टाइम पे 9 बज रहे थे, मुझे याद है, या नहीं 10 बज रहे थे, 10 o'clock, एंड हमने वॉकी टॉकी ऑन किया और डॉक्टर धर्म सिंह ने नीचे उठा लिया वहाँ पे जब वो फ्रेंडशिप पे चढ़ रहे थे, और हमारी आपस में बात हुई, उनको वहाँ पे रास्ते में मैसेज किया, तो वी वर एबल टू कन्वे एंड ही गॉट द मैसेज, ही वाज सो हैप्पी, ही ब्लेस्ड अस ऑन द वॉकी टॉकी। डॉक्टर सतपाल ने बात की उनसे, मैंने बात की, योगी ने बात की, एंड ही वाज एबल टू, मैडम भी शायद साथ में थी, और हम इन्होंने हमारे को काफ़ी ब्लेसिंग दी और बोला आराम से आना, सेफली आना, दिस इज़ हाफ द जर्नी डन, मेक श्योर यू कम सेफली। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग इतने एग्जॉस्टेड थे, क्योंकि हम लोग रात को 3 बजे उठ के 4 बजे निकले थे समिट कैंप से टू द समिट, और जब तक हम वापस आए थे, हम उस टाइम के दोपहर के 3 या 4 बज रहे थे। तो ऑलमोस्ट वी हैड बीन वॉकिंग फॉर 12 आवर्स इन अल्टीमेट एंगल्स एंड वर्टिकल प्लस वेरी हाई इंक्लाइन, एंड कमिंग बैक वॉज, मतलब ऐसा था कि ऑटोमेटिकली पैर के आगे पैर रख रहे थे, मतलब हमारे होश हवास ऑलमोस्ट पार्शली एफर्ट करना पड़ा था अपने आप को, बैलेंस लूज ना हो जाए उस चीज़ के लिए। तो वो मैं व्हेन आई रिकॉल इट, मेरे को लगता है कि अगर मुझे लगता है कि एक जो चीज़ और इम्प्रूव कर सकते थे हम, वो थी हमारी एफिशिएंसी ऑफ डिसेंट, क्योंकि वो हम लोग मेरे को आई डोंट रिकॉल कि मेरे को उतनी अवेयरनेस थी व्हेन, स्पेशली व्हेन वी वर क्लोज टू आवर कैंप 3। मतलब डेंजर पार्ट तो हम करके आ गए थे, वो हमने बहुत कॉशियसली किया, लेकिन जो मोनोटोनस पार्ट था ना, जहाँ पे बस पैर के आगे पैर रखना था और पता था काफ़ी सेफ है, तो उसमें मुझे मेमोरी नहीं है उस पार्ट की, क्योंकि आई वॉज जस्ट जोन्ड आउट कि, और मुझे बस याद है एकदम टेंट आ गया था हमने कि अरे कैंप 3 पे और वो भी उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट हुई कि डॉक्टर सतपाल ने बोला नहीं, वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ एक लंच करो या जो भी कुछ खाना है, पैक एंड लीव फॉर कैंप 2 राइट नाउ। और अगर हम अभी 5 बजे भी चलते हैं, हम लोग 8 बजे तक, उन दिनों पे अंधेरा 8 बजे होता था, बोले कि 8 बजे हम कैंप 2 पहुंच जाएंगे जस्ट बिफोर डार्कनेस। तो हमारे को उस टाइम फिर हमने पैकिंग भी की सारे कैंप, समिट कैंप की, वी हैड 3 टेंट्स ऑन द समिट कैंप, तीनों को पैक किया बाकी सामान लेके, और फिर हम दोबारा चले हैं फॉर अनदर 3 आवर्स, बट इट वॉज अगेन डिसेंट एंड वी हैड ऑलरेडी रेस्टेड, तो इट वॉज मच बेटर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग अच्छे से पहुंच गए थे वहाँ पे। JRD, what the funny comment from your end? No, it was a serious effort. What was funny in it? बहुत फनी इंसिडेंट्स थे यार। कुछ क्या याद आ रहा है तेरे को? At the top of my mind. कुछ याद नहीं आ रहा ऐसा कोई फनी? चलो कोई बात इसको INT हो गया है। हाँ, मौसमी, एनी अपडेट फ्रॉम? Maybe possible. तू भी जैकेट पहन ले, ठंड वंड ना लग रही हो तेरे को। भाभी आवाज मौसमी, नहीं एनी आ रही अपडेट आपकी। on Ranjit? Yeah. Ranjit will be able to make it. He's still in the surgery. Okay. So I think I feel very sad to not really see Ranjit in this. I don't know whether, what should we do? Should we continue for another 5-10 minutes, or No, I or don't should we wrap up? want to wrap up. He will not be able. I just called to find out he's still in the surgery. Okay, yeah.
So I think we can probably in that case, wrap up with a song as I had promised, which is कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी मोड़ पे मिलते रहेंगे और अपना कंपनी एक दूसरे की देते रहेंगे. मोस्ट लाइकली, एज सैंडी सजेस्टेड, वी शुड ट्राई टू मीट इन पर्सन next year, maybe not only just the expedition team, but mountaineering club alumni from with whom we have gone on many other treks, along the length and breadth of Himalayas, and we have been very lucky to have been able to experience that for a long time. So with that prayer and with that hope, we will wrap up, and few lines for all of you. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. Thank you. And with that, we wrap up our first pioneering episode of Climbology. In Climbology, we intend to bring the art, science, and craft of climbing in different sessions. And we will be inviting one of you individually to share your knowledge about mountaineering and climbing, and give some tutorials for our YouTube family and for people in the world. So thank you once again, especially Dilbagi, for joining us as a surprise, and ma'am, sir, Dr. Satpal, Moshmi for being there for Ranjit, Sandy, JRD, Sadbir, Ravi, Yogi, all of you without whom this recollection of memories would not have been possible. And with that, let's sign off. Thank you so much. Have a great day. Lovely seeing you all. Bye-bye. Thank you, everyone. It was a All great the catch up. Bye Bye bye. everybody. See you. Bye. Bye. keep it up. And Thank you, Yogi, ma'am. Yogi है कहाँ अभी? योगी मैम अभी निकल गया. वो हिसार में ही है मैम. हिसार में ही है. हाँ जी. अच्छा, हाँ जी, मैम, सर. योगी इज इन हिसार. अरे, योगी यूनिवर्सिटी में है. नहीं, योगी is doing private practice in Hisar. प्राइवेट प्रैक्टिस इन हिसार. उसके जयराज क्या कर रहा है? ये he is a sumo wrestler. JRD is He is a professional sumo wrestler. And he Sumo is wrestler